Hello everyone, welcome to EasyGanit. My name is Sardana, and there's a big announcement for all of you students who are preparing for CAT and students who are going to appear for CAT in this month of November 2020. I'm going to start a series for your quant section. In this series, we will be discussing quant for 10 minutes on daily basis. So I'll be uploading a 10 minutes video on daily basis on this channel of EasyGanit. And the concepts that we will be discussing will be from the quantitative aptitude section, and the purpose of this series is to discuss those important concepts which generally students forgot. For example, आपने number system से कोई एक concept पढ़ा, let's say you studied a concept of zeros in factorial or number of factors or positioning of factors, right? But there are some concepts which you tend to forget after some point of time, right? Or there are some concepts in which you are generally making a mistake, right? So कुछ concepts होते हैं जो बहुत general होते हैं और हमारे mind में हमेशा रह जाते हैं, but there are some concepts, right, जिसको एक time के बाद आप भूल जाते हो, right? So, अगर आप उसको ढंग से revise नहीं करो, and these are also the concepts जिससे आपके basic concepts भी सारे के सारे revise हो जाए, right? So these are the topics, these are the concepts that I will be uploading on this channel on daily basis, right? So starting with the number system, in this particular video, in 10 minutes daily quant, I'll be discussing a one question which is based on the concept of increase in the number of zero. Similar to this video, there will be a 10 minutes video uploaded on this channel on daily basis. हर concept के अंदर, हर video के अंदर आपको एक नया concept मिलेगा, आपके basic concepts भी उससे revise होंगे. अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो उससे कुछ ना कुछ बेसिक्स आपको और सीखने को मिलेंगे, और यूनिक कॉन्सेप्ट्स जो चैप्टर के रहते हैं, राइट, वेदर इट्स अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री और अलजेब्रा, राइट, जो यूनिक टॉपिक्स हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको हम ज़्यादा टाइम माइंड में, लंबे टाइम के लिए माइंड में नहीं रख सकते, और जो कुछ टाइम माइंड में रहते हैं और फिर आप जल्दी उनको भूल जाते हो, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर आज से डेली बेसिस पे मिल जाएंगी. सो आप डेली बेसिस पे 10 मिनट्स के लिए क्वांट मेरे साथ इस चैनल के ऊपर सीख सकते हो. So let's start with our first video, the first question of 10-minute daily quant series, and the question is, as I told you, it's based on the concept of increase in the number of zeros. There's a number x factorial such that x is less than the largest possible 3-digit number. Okay, so the point here that you need to note down that x is the largest possible 3-digit number. X is a number which is less than the largest possible 3-digit number. What is the largest possible 3-digit number? It's 999. So can I say x is a number which is less than 999? Yes. Okay. Concept क्या है वो मैं आपको questions के बाद समझा दूंगा. So don't worry, अगर आपको increase in number of factorials का concept नहीं आता है, I'll tell you. First let's understand कि question में क्या पूछा हुआ है और किस concept का knowledge आपको होना चाहिए इस question को solve करने के लिए. Okay, similarly, there's another number which is y factorial such that y is less than the largest possible 4-digit number. Okay, y is less than the largest possible 4-digit number. Largest possible 4-digit number is, guys, 9999, right? So that means y is a number which is less than 9999. Largest possible 4-digit number. X is less than largest possible 3-digit number. Okay. All right. How many different ordered pair numbers x, y exist such that x minus y should be equal to 4? The numbers of ordered pair that exist such that the difference of x and y should be equal to 4, and the difference of the number of zeros in their factorial is also equal to 3. That means the number of zeros in x factorial and the number of zeros in y factorial, right? The number of zeros in x factorial, the number of zeros in x factorial, and the number of zeros in y factorial, right? Number of zeros in y factorial. The difference of the number of zeros in x factorial and the number of zeros in y factorial should be equal to 3, right? So numbers के बीच में difference 4 का चाहिए, but उनके zeros के बीच में जो difference होना चाहिए वो 3 का होना चाहिए. Okay. So क्वेश्चन को देख के यही आइडिया लग रहा है आपको कि आपको फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट आना चाहिए. क्या कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस का? आई होप ये आपको आता हो, बट स्टिल इन ए मिनट आई विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग दैट कंसेप्ट, बिकॉज
सीरीज का पर्पस यही है कि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इन वीडियोस के साथ आपके कवर हो जाए। ऑलराइट, सो गाइज वी नो दैट अगर आपको जीरोस बनानी है, जीरोस मीन्स ट्रेलिंग जीरोस, राइट? द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेलिंग जीरोस की नंबर के एंड में जो जीरोस आएंगी उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का होना चाहिए। ओके, ट्रेलिंग जीरोस कैसे बनती है? सी दैट गाइज, if I multiply 2 power 1 with 5 power 1, the number of zeros that you will be able to make will be 1. Okay, if I multiply 2 power 2 with 5 power 2, the number of zeros that you will be able to make will be 10 power 2. If I multiply 2 power 3 with 5 power 2, you see that to make a zero, to make a one trailing zero, you need a combination of 1 2 and 1 5. दो zeros के लिए 2 2 and 2 5 चाहिए. If you have 2 3, 3 2 and 2 5, it doesn't mean that you'll have 3 0. You'll still end up having a number which will be having a 2 trailing zeros, right? So it's like let's say if a boy and girl wants to get married, right? You have 3 boys, 2 girls. The number of marriage possible will be 2 only, right? So that एक लड़के की 2 लड़कियों से शादी नहीं करवानी है या एक लड़की की 2 लड़कों से शादी नहीं करवानी है, right? इंडियन कल्चर में रहते हुए लेट्स से इफ आई से कि आपके पास 3 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ मैरिजेस पॉसिबल? इट विल बी 2, राइट? सो इट डजंट मीन दैट इफ नंबर ऑफ 2s available are 3 and the number of 5s available are 2, it doesn't mean that you'll have 3 zeros at the end of it, right? A combination of 1 2 and a combination of 1 5 will give you a 1 0. So therefore 2 power 3 into 5 power 2 will give you 2 zeros at the end of it, right? Okay. So even if I have 2 power 7 and let's say 5 power 8, right? So the girls zyada hogi, boys are 7. It doesn't mean that the marriages possible are 8, right? Still, the marriages possible will be 7 only. 7 boys, 8 girls. Marriages possible will be 7. So 7 2s and 8 5s will give you 7 zeros, right? The combination that will be able to make will be 7 0. 2 और 5 के 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे, सो 10 की पावर 7 बनेगा, 1 5 एक्स्ट्रा एज इट इज रह जाएगा। ओके, कैसे ये कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल में यूज होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट आल्सो नाउ। यू सी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट a factorial, right? So let me just clear this information. Let's first understand the concept and then we'll get back to this question. In a factorial, guys, right? If I see that in a 5 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Now you see that what is the combination of 2 and 5 here? There's a 2 power 1, 5 power 1, so 10 power will also be 1. That means when this complete number will be multiplied, the trailing zero, right, the unit digit, in the unit digit, right, if you start counting the zeros from the unit digit, it will be only 1 0. When you go to 6 factorial, will there be any change in the number of zeros, guys? You see that 6 factorial is nothing but 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. No, there is no change in the zero. The number of zeros will still be same because ना तो 5 का extra entry नहीं हुआ, right? Zeros बनाने के लिए 2 और 5 के combination चाहिए. अभी भी 2 और 5 का एक ही combination है, so 0 भी एक ही बनेगी, right? So you can multiply all the number, you will see 720 बनेगा. 720 means trailing zero जो है वो एक ही बनने वाली है, right? So what I am writing down over here is a trailing zeros, right? Okay. So 7 factorial में कोई number of zeros increase होगा नहीं. When you go from 5 factorial to 6 factorial and then 6 factorial to 7 factorial, there is no entry of extra 5. So there is no increase in the number of zeros. Zero नहीं बढ़ेगा. 8 factorial में number of zeros बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, because 8 factorial में कौन सा extra 5 आया? नहीं आया. 9 factorial में बढ़ेगा? नहीं आया, नहीं बढ़ेगा. 10 factorial, when you move from 9 factorial to 10 factorial, you see that 10 की एक्स्ट्रा एंट्री होने की वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एंट्री ऑफ 10, 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10, you see that now you have a 1 5 over here and 1 5 in the 10 also, because 10 is a combination of 2 into 5, so you have 2 5s now. Therefore the number of trailing zeros at the end of this number will be 2, right? So you see that 5 factorial से 9 factorial में कोई भी increase नहीं हुआ number of zeros के अंदर. But the moment you shift from 9 factorial to 10 factorial, the increase in the number of zero is 1. तो यहाँ पे समय 1 0 थी, लेकिन अभी 10 factorial से जो number of zeros शुरू हो जाएंगी वो 2 शुरू हो जाएंगी. Okay. क्या 11 factorial में फिर कोई increase होगा? Obviously नहीं होगा, because 11 factorial, जब आप 10 factorial से 11 factorial पे move करोगे, when you move from 10 factorial
to 11 factorial. Is there any extra entry of 5? No, there is no extra entry of 5, right? 10 factorial में product of first 10 natural number आएगा और 11 factorial में product of first 11 natural number आएगा. तो क्या कोई 5 extra enter हुआ? नहीं हुआ. 5 extra कहाँ पे enter होगा? You know that 10 के बाद the first multiple of 10 of 5 after 10 the next multiple of 5 will be 15. So when you move from 10 factorial to 15 factorial, the number of zeros will get increased from 2 to 3, right? So 10 factorial में 2 zeros होंगी, तो 15 factorial में 3 zeros हो जाएंगे. Because of entry of 15, which is a multiple of 5, we will have 3 extra 5. We'll have total 3 5. So number of zeros will also jump to 3. Okay. क्या 15 फैक्टोरियल से लेके 19 फैक्टोरियल तक कुछ एक्स्ट्रा एंट्री होगी? नहीं, राइट. 10 फैक्टोरियल से जब 15 फैक्टोरियल जाओगे तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगी. 15 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरो चेंज होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज कोई भी एक्स्ट्रा 5 एंटर नहीं करेगा. यू सी दैट. आप 15 फैक्टोरियल में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स लिखोगे, राइट. एंड व्हेन यू मूव टू 16 फैक्टोरियल तो यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा 16 का एंट्री होगा. 16 की एंट्री से नंबर ऑफ जीरोस नहीं बढ़ने का चांस. ओके. 19 फैक्टोरियल तक कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगा 5 का, राइट. सो द मोमेंट यू गो टू 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल के शुरुआत में ही 20 फैक्टोरियल में आपको एक 20 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 का एक मल्टीपल मिला, मतलब एक एक्स्ट्रा 5 एंटर किया. एक एक्स्ट्रा 5 एंटर करने से जीरोस एक बढ़ेगी, राइट. सो सिमिलर लाइक कि इस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ 5 3 थे तो 30. 5 इज लेट्स से इज नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट. तो 15 से 16 फैक्टोरियल के ग्रुप में कोई गर्ल की एंट्री नहीं हुई, मतलब 5 की एंट्री नहीं हुई. 17 18 19 तक कोई गर्ल का एंट्री नहीं हो रहा है. सो नंबर ऑफ जीरोस मतलब मैरिजेस इंक्रीज नहीं होंगी. 20 फैक्टोरियल में 20 के साथ एक एक्स्ट्रा 5 एंटर हुआ. That means एक नया girl, let's say we got a new girl in the group. So now the number of possible marriages, which marriages are of 2 and 5, right? 10 is our marriage, right? Which is a combination of 2 and 5. 2 is our boy and 5 is girl. Boys both are here, right? Every second number is a multiple of 2. There are number of boys, right? But 5 is a girl, right? Which is coming after every fifth number. So 16 से 19 में किसी भी गर्ल का एंट्री नहीं हुआ, मतलब 5 का मल्टीपल नहीं एंटर किया. 20 फैक्टोरियल में जाके आपका 20 मिला, which is a multiple of 5. That means a new girl enter, and now the number of marriages possible. That means a combination of 2 and 5 possible will be 4, because आपके पास 1 से 20 के बीच में 5 में एक 5 पड़ा हुआ है, 10 में एक 5 पड़ा हुआ है, 15 में एक 5 पड़ा हुआ है और 20 में भी एक 5 पड़ा हुआ है. So therefore increase in the number of zeros will be 1. So 15 से 19 तक सभी नंबर्स में 3 ही 0 आएगा, बट 19 फैक्टोरियल से जैसे ही आप 20 फैक्टोरियल में एंटर करोगे नंबर ऑफ जीरोस विल गेट इंक्रीज बाय 1. सो नंबर ऑफ जीरोस उसके अंदर 4 हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. 20 factorial we have seen 20 factorial number of zeros. 20 factorial we have seen number of zeros are 4 because we have 4 5s, right? 4 girls, right? Number of zeros, right? Number of zeros in trailing zeros, right? Just write down the word trailing zeros in 20 factorial. Okay. 20 factorial से 21 factorial में जाने पे कोई extra 5 enter करेगा? नहीं करेगा. So number of zeros will still be 4. 22 factorial में नहीं, 4 ही enter करेगा. 23 में भी 4 ही 5s हैं, so 4 zeros. 24 factorial में number of zeros will still be 4. But you see that 25 factorial के अंदर, the moment you enter into a 25 factorial, you see 25, the entry of 25 is made of 2 5. 25 is made of 2 5. 2 extra 5, 2 girls extra आई group के अंदर, तो number of marriages 2 से increase हो जाएंगी. That means number of zeros 2 से increase होंगी, 1 से नहीं होंगी, right? So you see 4 से अभी zeros जो होगा वो 6 पे jump करेगा. That means 5 number of zeros in any factorial is not possible. Because now our number is getting jumped by 2, so 4 जो as a number था वो skip कर गया. ये concept है increase in number of zeros का. So every time a multiple of 25 enters, the number of zeros get increased by 2. So if I want the difference in the number of zeros to be equal to 3, दो consecutive numbers में
अगर मुझे 3 का नंबर ऑफ जीरोस का डिफरेंस चाहिए तो मेरे को 3 एक्स्ट्रा 5 लाने पड़ेंगे। 3 एक्स्ट्रा 5 लाने के लिए मुझे 5 की पावर 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। 5 की पावर 3 का मल्टीपल इज 125। सो दैट मीन्स व्हेन यू मूव फ्रॉम 124 factorial to 125 factorial, the number of zeros will get jumped by 3. अगर 124 factorial में number of zeros n होगा तो 125 factorial में number of zeros will be 3, right? से 3 से increase होगा। Okay, 124 factorial में n होने का मतलब है कि 120 factorial में भी number of zeros n होंगी। क्या 121 factorial में will there be any increase in the number of zeros? No, कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री की 5 n क्या है, जो भी हो उससे अपने को लेना देना कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। अपने को डिफरेंस 3 पे मेंटेन करना है। ओके, 120 से 121 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस विल बी स्टिल सेम। ओके, 122 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वह उतनी ही होंगी जितनी कि 121 फैक्टोरियल में है। 123 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस विल बी n also. 124 factorial में number of zeros will be n also. But the moment you enter into 125 factorial, because of extra 125 आया ना, 125 से 5 into 5 into 5 enter किया, that means 3 zeros extra enter हुई। So 3 zeros के extra enter होने की वजह से number of zeros अगर यहाँ पे n था तो यहाँ पे n plus 3 हो जाएगा। ओके, तो 126 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, वो भी n plus 3 होगा। 127 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, n plus 3 होगा। 128 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, n plus 3। 129 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, n plus 3। बट when you talk about 130 factorial, the number of 130 now is a multiple of 5 और 135 की पावर 1 का मल्टीपल है, तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ जीरोस अभी n plus 4 होंगी। मेरे को n plus 4 का डिफरेंस नहीं चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस में 3 का डिफरेंस चाहिए। Now tell me guys, इस पूरे पेयरिंग में ये 5 नंबर्स में ऐसे कितने पेयर्स हैं so that the difference of the number is equal to 4 and the zeros difference is 3। zeros difference तो आप सभी में ही 3 का डिफरेंस है, राइट? इसमें और इसमें भी 3 का 0 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें भी 3 का डिफरेंस है, right? These number also have a difference of 3 in terms of number of 0। But tell me, a 120 as a number will have a difference of 4 with what number? इसके साथ तो नहीं बनेगा, इनका भी नहीं बनेगा, right? So 4 का difference you see 125 factorial और 121। So x as a number of 125। So if I take x as 125, y as 121, तो इसमें 4 का difference आया और इनकी नंबर ऑफ जीरोस में डिफरेंस तो 3 का है ही। यू कैन ऑल्सो सी, आई कैन ऑल्सो टेक 126 फैक्टोरियल एंड अनदर नंबर कैन बी 122 फैक्टोरियल। सो 126 और 122 का डिफरेंस भी 4 का है और नंबर ऑफ जीरोस भी 3 का डिफरेंस है। 127 फैक्टोरियल एंड 123 फैक्टोरियल, द डिफरेंस इज ऑफ नंबर ऑफ जीरोस डिफरेंस 3 एंड नंबर्स डिफरेंस इज 4, राइट? सो कितने पेयर्स बन रहे हैं गाइस, टेल मी? 127 minus 123, 128 और 124। So see that इस केस में आपके टोटल 4 पेयरिंग्स बनेंगे, राइट? कौन कौन से? ये वाले, राइट? So let me just highlight over here, right? So 120, 124, 127, 123, 126, 122, 125 and 121, right? 125 के फर्स्ट मल्टीपल में 125 के फर्स्ट मल्टीपल में 4 पेयरिंग्स हुआ, ओके? 120, okay, what are the numbers we are looking for? We are looking for all 3-digit number because x is a value which is less than the largest possible 3-digit number, and the largest possible 3-digit number is 999, right? So 125 का पहला मल्टीपल 125 था जिससे हमें 4 पेयर्स मिले। सिमिलरली 125 का सेकंड मल्टीपल होगा 250, राइट? 125 का सेकंड मल्टीपल होगा 250, उससे भी आपको 4 पेयर्स मिलेंगे, राइट? यहाँ पे आप लिखोगे 245, 46, 47, 248, 49 and then 250, 251, 252, 253 and 254 and then you will make 4 pairs, okay? 125 का थर्ड मल्टीपल इज 375, तो उससे भी आपको ऐसे ही 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। 125 का फोर्थ मल्टीपल जो आएगा दैट विल बी 500, उससे भी आपको सेम ही 4 पेयर्स मिलेंगे, राइट? 125 का फिफ्थ मल्टीपल जो होगा दैट वुड बी 625, उससे आपको 4 पेयर्स नहीं मिलेंगे। रीजन वुड बी
125 में 5 की पावर 3 है और आप 5 का ही मल्टीपल ले रहे हो, तो उसमें 5 की पावर 4 होगी, तो उसका जो नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस होगा वो 3 नहीं होगा, वो 4 होगा। दैट मीन्स जब आप 624 फैक्टोरियल से 625 फैक्टोरियल पे जंप करोगे जाओगे, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है यहाँ पे अगर n होंगी तो यहाँ n+4 होगी, बिकॉज दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 पावर 4। ओके, सो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। 125 का सिक्स्थ मल्टीपल, 125 का जो सिक्स्थ मल्टीपल होगा, द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 125 would be 125 into 6. The sixth multiple of 125 will be 125 into 6, which will be 750, right? So 750 में भी आपको 4 pairs मिलेंगे। 125 का 7th multiple would be 875, 875, इसमें भी 4 pairs मिलेंगे। 125 का 9th multiple, sorry, 7th multiple and 8th multiple will be 1000. 1000 is a 4-digit number. X is supposed to be a number. Y is supposed to be a number. X is supposed to be a number which has to be less than 1000. X जो है वो largest possible 3-digit number 999 से छोटा नंबर है, तो आपको ये नहीं काउंट करना है। सो इतने ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशंस बने? 4 + 4, 8 + 4, 12 + 4, 16 + 4, 20 + 4, 24, right? Yes. 1 से लेके 125 के फर्स्ट मल्टीपल से लेके 125 के 7th मल्टीपल तक आपको जाना है, राइट? 7th मल्टीपल तक आपको जाना है, और उसमें से 5th मल्टीपल के लिए कोई भी पेयर नहीं मिलेगा, बाकी सभी 6 के लिए 4 मिलेंगे। सो देयर विल बी हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स एग्जिस्ट? 24 पेयर्स विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट? So guys, you see that by discussing this one single question, we are able to revise our factorial concept, number of zeros का concept भी आपका revise हो गया, increase in number of zeros भी हमने कर लिया, और एक tricky question भी हमने solve कर लिया। So exactly with this kind of question, right, we'll continue with our journey till CAT, right? Every day at 10 minutes daily quant का वीडियो एक अपलोड होगा। कुछ वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट? कुछ वीडियोस 10 मिनट से कम भी हो सकते हैं, बी अराउंड 10 मिनट्स वीडियो, राइट? सो डेली अगर आप 10 मिनट का एक वीडियो आप देखते हो, तो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब रिवाइज हो जाएंगे, और आपके माइंड में भी वो सब कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल्सो थ्रू द all these videos. You can also revise all these concepts again by watching the videos again, right guys? Please share the channel with all of your friends. If you like the video, please share it, and subscribe to the channel, share it with all of your friends, right, as much as possible. So see you then in the next video, guys. Tomorrow I'll be uploading one more video like this, guys. Thank you so much for watching the video. Thank you.